Now we discuss various type of drilling machines and there are a useful classification according to their work and axis of symmetrical diagram. In their drilling machines are classified into basically general purpose and single purpose and specialized drilling machines. ड्रिलिंग मशीन को यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो जनरल पर्पस मशीन के अकॉर्डिंग, फिर सिंगल पर्पस मशीन एंड फिर स्पेशलाइज्ड मशीन। सबसे पहले जो बात करते हैं यहाँ पर जनरल पर्पस मशीन के बारे में, जो लिखा हुआ है कि जो एनी होल मेकिंग ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करते हैं इन द जनरल पर्पस मशीन के तहत आते हैं, और जिस क्लास इंक्लूडेड बेंच टाइप ड्रिल मशीन, ड्रिल प्रेस आते हैं, सिंगल और मल्टीपल स्पेंडल, upright drill press, radial drilling machines and other. These are the general purpose machine. Single purpose machine की बात करते हैं तो in their our class included center drilling and deep drilling machines, horizontal and vertical types, semi-automatic and automatic drilling machines. Specialized machines की बात करते हैं तो specialized machine in their special unit built multiple spindle drilling machines intent for performing a single definite operations are used in a mass production. So first that is we discuss that is your general purpose drilling machines. In the general purpose drilling machine we have seen this diagram. There are a block diagram of drill press. In the upper side there are a head, then column. You have seen this diagram carefully. This is the head, column and base, column, head, and this one is the spindle, base, column, head, and this one is the spindle, this one is the table, and this position is known as your, that is this throat and distance, and this one is the rotation. So this is the basic diagram. This is the block diagram of drill press. So then what are the general purpose drilling machines? That is we see in this block diagram single spindle जनरल पर्पस मशीन, दैट इज नोन एज ड्रिल प्रेस। इसका जो मेन पार्ट्स हमने यहाँ पे देखा, बेस, कॉलम, टेबल और हेड। अपराइट कॉलम जो कि सपोर्टेड है बाय अ हैवी बेस के थ्रू, और जो टेबल है वो आपकी सस्पेंडेड है फ्रॉम द कॉलम एंड जो कि मूव कर सकती है, मे बी मूव अप एंड डाउन, और क्लैम्प है एट अ डिजायर्ड हाइट से। जो ड्रिल हेड है वो माउंटेड है ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम और कंसिस्ट ऑफ अ मेन ऑपरेटिंग पार्ट्स, जो कि यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है। एंड देयर आर कटिंग टूल्स जो कि held in spindle are power. The drill head is mounted on the top of the column and consists of the main operating parts. Cutting tool जो कि held in spindle are power driven from the motor by a pair of cone pulleys, V-belt drive or through the speed gearbox to obtain the various speed. जो एक्सियल फीड है ऑफ द टूल का वो कंट्रोल हो रहा है बाय हैंड ऑन द स्मॉल मशीन, बट लार्जर मशीन में प्रोवाइडर पावर फीड फॉर द ड्रिल स्पैंडल, एंड द स्पैंडल हैज अ key way of or a spline so that it can move, so that it may be moved up or down along its axis for feeding, but still retains its drive at any point. The rack and pinion is rotated to the worm gearing and hand feeded lever. This is the diagram, and there are this is the manual feeding, and the pinion meshes with a rack secured a non-revolving sleeve or will is which is a spindle freely rotate. There are diagram and it shows that, and the spindle have feed in the axial, that is vertical direction, together with the sleeve, and tables and
often spaces are provided with the T-slots are clamping for clamping work or work holding devices. This one is the shows. So then size of drill press. The size of drill press is expressed in one or more of the following ways. पहला, by the swing, which is the twice the distance from the nearest face of the column to the center of the spindle. This indirectly refers to the diameter of the largest disc that can be drilled through the center, and the maximum diameter of the drill that can be used on steel. By the maximum distance between the spindle and the table, that is the maximum height of the job that can be accommodated with the table in the lowest position. This is the block diagram of drill press. And by the distance of the spindle, this means the spindle moves up and down, that is the length of the spindle feet. This is the diagram shows. This is the feeding arrangement diagram. You have seen this. This one is the feeding arrangement diagram, and this is the bearing, spindle, pinion, housing, sleeve, bearing. This one is the keyway, pulley, key, bearing, housing, sleeve, pinion, spindle, and bearing. This is the feeding arrangement. Then type of drill presses. Firstly, that is the bench type. बेंच टाइप जो होती है बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप है जो कि यूज़ होती है इंडस्ट्री में, और इसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिव ड्रिल प्रेस, क्योंकि फीड लेवर जो होता है वो ऑपरेटेड होता है बाय हैंड. इसको अलाउ करते हैं ऑपरेशन को टू फील हाउ टू ड्रिल इज कटिंग. एंड जो ड्रिल गेट्स इनटू ट्रबल, तो जो प्रेशर है ऑन, देन इफ द जो ड्रिल है वो गेट्स इनटू ट्रबल, तो प्रेशर ऑन इट्स एंड कैन रिलीज. जो डिज़ाइन है इसका यूज़ होता है फॉर लाइट वर्क यूजिंग ए स्मॉल ड्रिल अप टू 9 अबाउट 9.5 mm से लेकर 12.5 mm डायमीटर ड्रिल्स के लिए. और इसको कंट्रोल्स कर सकते हैं आर लाइट और डेलिकेट स्पीड्स फ्रॉम 800 से 9000 रिवॉल्यूशन पर मिनट आर अ टिपिकल रेंज. पर्टिकुलर बात करते हैं अपराइट ड्रिल प्रेस मशीन के बारे में, तो देर आर द मीडियम हैवी ड्यूटी मशीन और stand on a floor. This machine is usually has a gear driven mechanism होती है और for different spindle speed और automatic या power feed device. इस मशीन का basically हम लोग will take a larger drill or cutting tools than the standard bench type machine. Single spindle upright drilling machine जो कि can be drill holes up to 75 mm in diameter up to 350 mm deep. पर्टिकुलर बात करते हैं तो दीज मशीन्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पेंडल स्पीड्स और फीड्स एंड आर एम्प्लॉयड therefore not only the for drilling from the solid but also the core drilling, that is your core drilling, reaming and taping operation. तो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप की जो मशीन की बात करें, देयर आर बॉक्स कॉलम अरेंजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अपराइट मशीन, एक होता है राउंड कॉलम टाइप जिसको बोलते हैं पिलर मशीन. अपराइट मशीन की बात करते हैं तो जो अपराइट मशीन है दैट इज जिसमें कि कॉलम इज अ ऑफ अ बॉक्स सेक्शन होता है और बॉक्स कॉलम जो होता है इज बोल्टेड टू द बेस. वर्क टेबल जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है विद अ बैकेट और जो कि स्लाइड करती है ऑन द वे एट द फ्रंट ऑफ द मशीन. सपोर्ट एंड एलिवेटिंग मूवमेंट जो होता है टेबल का इज प्रोवाइड बाय द टेलीस्कोपिक स्क्रू अंडरनेथ इट्स सेंटर. और जो टेबल होता है ऑन दीज मशीन्स का कैन बी स्विंग. जबकि राउंड कॉलम टाइप जिसको हम लोग पिलर मशीन्स बोलते हैं, इन दर पिलर मशीन जो टेबल होती है इसमें इंस्टेड ऑफ बीइंग कैरीड ऑन अ वर्टिकल स्लाइड जो कि कैरीड करती है ऑन द राउंड पिलर, जो कि हेल्प करती है swinging of the table to one side of the that tall work pieces can be mounted on the base
Here the table support is less rigid than the upright machines or places restriction on its width. The box type machines, box column machine, which being more rigid, and a round column machine is adopted for a heavier work.